So, namaskar all of you. So, yesterday we had our first test, that is 2012 English paper. Okay, and those of you who have given the papers already, it has been evaluated and given back to you. So, basically, the top 2 marks, okay, top 2 papers, I will show it now. The names, like those who have got the highest marks, okay, that is redacted. But you can see how they have written and all. Of course, you have the model answer with you also. Okay. So this is the first paper, 93 out of 150. So more or less, you can see that structure in this paper, it is quite, the handwriting is quite good. Okay, but the only thing is that it is very clumsy. ठीक ଅଛି बहुत लगेकी लिख ଦେଇଛନ୍ତି तो सेटा आउ टिके बेटर कर परले ओके रेस्ट डिटेल्स रे आपनकर कोन कोन पर क्वेश्चन कोन आउ चेंजेस करिवार अछि that has been given to you. Okay, another thing is that you have to write the draft précis. Okay, jete jon deychanti around 30% of you have missed the draft précis. Okay, draft précis apana lekhinanti सीधा फेयर प्रेसी रू स्टार्ट करछे तो राइट द ड्राफ्ट प्रेसी एटा आपन को स्टेप मार्किंग भी दबो बहुत सहज भी हबो ओके आपन को लिखिया पे आ ठीक सेमदी एठी जो 5 मार्क क्वेश्चन है हमर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन रे क्वेश्चन जहां पचरा हिची एग्जैक्टली सेया लिखिबे तापर सेही पॉइंट्स को आउरी जदी आपन ओके डिटेलिंग करिवे ताले ठीक अछि अलग पॉइंट्स जदी डिटेलिंग करिवे तो मार्क आसीबनी सेतरे राइट सो लाइक सम पीपल हैव आल्सो गॉट 4 और 5 ओके सेटा भी देखिबार अछि तो एटा गोटे गला एंड these are the two papers which have got okay more than 90 पेपर जो जो माने देछ this is the second paper so this is 94 okay eta I think till now those of you have given this is the highest mark okay so here also it is fine एटी गोटे भल जिंस हला बहुत क्लियर अछि पेपर टा ठीक अछि त माने कोन ना जो गैप्स उडा ठीक रे दिया आइछि व्हाइट पार्ट ऑफ द यू नो पेपर सेटअप प्रॉपर्ली देखा जाउछि तो माने ठीक गोटे क्लियर बेसी क्लमजी हेनी तो कंटेंट को आउरी बढ़े दबो सेटा बाकी जार पेपर ऑलरेडी यू हैव गॉट द feedback, detailed feedback. So just go through that part. Okay. एटी भी सेम जिंस अछि इंप्रूवमेंट करना जो इंग्लिश रे आपण लेखु चंती कॉम्प्रिहेंशन रे आंसर उडा ताकु टिके आउरी टू द पॉइंट करंतु ओके देन यू कैन गेट इवन बेटर मार्क्स 3 रु 4 और इवन कोको क्वेश्चन रे 5 भी हे जाय पारे ओके सो दिस इज अबाउट यस्टरडेज आजिरो टेस्ट आपनकर रहइबो से 2012 रो प्रोसीजरल लॉज रो ऑलरेडी यू हैव द मॉडल आंसर्स इन योर ऐप सो एथरे मेजर जिंसो ए रखिबे मने कि स्ट्रक्चर ता कोन होबार अछि आई टोल्ड यू फ्रॉम इन द फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास आल्सो कि आपण केबे भी एग्जैक्टली आ भलिया लिखि परिबेनी कि लिखिया दरकार भी नहीं इंपोर्टेंट जिंसोडा कवर हिची कि नहीं सेटा आपण को देखिबार अछि ओके एठी 4टा 5टा सेक्शन देछि ओके तो मोर सब गुडा मु न लिखि पारे किंतु मोस्ट इंपोर्टेंट तो दीटा लिखिबी ना ठीक अछि एठी फॉर एग्जांपल ए क्वेश्चन रे जोडी से कहछि कि व्हाट आर द गाइडलाइंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ठीक अछि explain with help of decided cases from supreme court what precautions must the police officer take तो एठी कोन ना से डीके बसु जजमेंट रो जेते इंपोर्टेंट ये सबुडा दे दिछ माने 8 9 पॉइंट देछि इज इट पॉसिबल 10 15 बार क्वेश्चन रे जोडी होते 15 मिनिट के 10 मिनिट टोटल मिलुची मु सेटा टोटली लिख परिबेनी किंतु मु पढिला परे मोर ओडा आईडिया तो हबो आ तापरे मु 10टा न लिखि पार 4टा तो लिखि देबी 5टा तो लिखि देबी ठीक अछि सो you cannot write exactly like the model answer. Model answer is somewhere around kete page अछि eta 40 पेज खंडे अछि राइट but of course eta कोन पई ना
आमको दीटा क्वेश्चन लिखिबार अछि 65 पेजेस अछि किंतु ये तो सब गुडा देथिबो ना पूरा 12टा जाक क्वेश्चन रो हमको 6टा क्वेश्चन करार अछि हैला सो मॉडल आंसर जस्ट ये फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन रे पचरुची एक्सप्लेन विथ केस लॉज एस लगी छी हैला मल्टीपल केस ये 5टा 6टा दोछ हमर दीटा लिखिले सफिशिएंट बुझ पाले तो सो टाइम हिसाब रे लिखिबे मॉडल आंसर इज जस्ट गिविंग यू द डायरेक्शन टा आपन को दोची आपन से हिसाब रे ताको लिखिबे अब मु मॉडल आंसर भलिया लिखिबी सेटा पॉसिबली होबनी हां स्ट्रक्चर से केमती पॉइंट्स रे लिखुछ गोटे पॉइंट देला तार 4 लाइन 3 लाइन एक्सप्लेनेशन देला सेटा मते देखियार अछि ओके और स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट इंग्लिश हेतो कि लॉ हेतो जोथरे भी हमर स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर इज वेरी इंपोर्टेंट ठीक अछि आजिरो वैल्यू एडेड जिंस रे हम कोन देखिबा आई टेल यू अबाउट इंडियन एविडेंस एक्ट ओके तो हमें गोटे गोटे स्टैट्यूट रो इंपोर्टेंट मैक्सिम देखो सेमिति कहया को गले बहुत गुणे मैक्सिम्स अछि जो गुडा कवर हबो गोटे गोटे एक्ट रे ओके बट एते तो हमें मन भी रख पेले ना दरकार भी नहीं रो क्वेश्चन निश्चित पडुची कि पढिबार बहुत संभावना अछि सेही सेक्शन संगे कोन रिलेटेड मैक्सिम्स अछि एटा आपण पाई जिबे ओके गोटे जो फोल्डर अछि मेंस क्रैश कोर्स अंडर रे देखियो गोटे मैक्सिम्स इंपोर्टेंट मैक्सिम्स एंड डॉक्ट्रिन्स से थ्रू आपण पाई परिबे ठीक अछि सो एथरे खाली एति की मन रखियार अछि आपण एतले निज नोट करिवे सेते बेले कांसेप्ट ता कोन ओके मैक्सिम ता कोन कांसेप्ट ता कोन आउ को सेक्शन रे मते लिखिबार अछि these three things you have to keep in mind okay what is the maxim ठीक अछि को सेक्शन संगे आउ को अंडर रे क्वेश्चन पडिले एटा बेसी इंपोर्टेंट मैक्सिम तो मु 10टा पढि देबी कोठी लिखिबार अछि सेटा मते जानियार अछि ओके तो एटा टिके टाइम लेकिया को पडिबे दीज आर वैल्यू एडिशंस ठीक अछि तो मते गोटे क्वेश्चन रे 15 रु 9 मार्क मिलुतला एगुडा वैल्यू एडिशन टा यूज कला परे गोटे डायग्राम करनी भलो रे ओके ता रिलेटेड मैक्सिम्स देली ठीक अछि प्लस इंपोर्टेंट केस लॉस देली तो मते गोटे 2 मार्क्स अधिक मिल जिवो ओके आ सब क्वेश्चन एमती गोटे 2 मार्क 10-15 मार्क्स टोटल पेपर ऊपर दैट इज गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट तो एटा मैक्सिम्स कला एटा बेसी नहीं 15-20 टा मैक्सिम्स आउ जोटा जो जगह रे यूज करिवार अछि ता सहित सेटा आपन को यू हैव टू स्टडी दैट तापर आसी गला डॉक्ट्रिन्स भी से को सेक्शन रे कोन डॉक्ट्रिन ता अछि ओके हार्डली 15 भी नो 10 की 12 अछि ओके एटा टिके माइंड रे रखिबे एटा आपन को लर्न करिया पे पड़िबो ए दिस इज फॉर 50 मार्क्स ठीक अछि गोटे गोटे स्टैट्यूट हमर 50 मार्क रो असुची प्रोसीजरल रे ओके 50 तेणु आपन को सेटा देखिया पे पड़िबो okay so this you will get in your that maxims and doctrines folder सेटा as per statute सब थरा गोटे गोटे स्टैट्यूट रे आसीबो आपन ताको प्रिपेयर करिवे सो दैट प्रीलिम्स रिजल्ट बाहरीबा भितरे आपन को ए काम सब सर जेथिबो ओके टेस्ट सीरीज टेस्ट 1 रो भी दिया ही सारी छी ओके मॉडल आंसर बट सेटा डिस्कशन मु अलगा करिवे एथरे नो एटा हमें पीवाई क्यूज रो प्रथमे सारिबो ओके so just a minute